Hello बच्चों, let's read this question. Which of the following statements are not correct? And these are the following options given to us, which says different quantity of electricity deposit more of iron from ferric sulphate solution than from ferrous sulphate solution. And second says electrochemical equivalent of an element can be obtained by dividing its equivalent weight by 96500. Option third is 1 Faraday always liberate 1 mole of the substance at the electrode. And option 4 is a 60-watt bulb emits 60 joule of energy per second. So in this question we have seen different terms use की गई हैं electrochemistry chapter की, in which we can see electrochemical equivalent है Faraday है, and apart from this इक्विवेलेंट वेट की भी बात की गई है. सो बाय दिस वी कैन से जो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट होगा, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. एंड अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट ऑप्शन, जो हमारे पास फेरिक सल्फेट सॉल्यूशन का मास डिपॉजिट होगा, दैट विल बी more than the ferrous sulfate solution. So let us write the equation for this. जो हमारे पास ferric ion होगा, that will gain the 3 electron and form Fe, and the same way ferrous जो होगा ion, that will gain 2 electron and iron का formation होगा. So हमें चेक करना है जो मास डिपॉजिट होगा, and according to the first law of electrolysis of the Faraday, that says mass of any substance deposited or liberated at any electrode is directly proportional to the quantity of electricity passed through the electrolyte, जिसे हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं, and it represent Q coulomb of electricity. whereas जब हम proportionality का साइन रिमूव करेंगे तो कांस्टेंट इंट्रोड्यूस होगा, which is known as the electrochemical equivalent. and जो electrochemical equivalent है Z, that is equal to the molar mass divided by the n factor. And here we can see जो हमारे पास n factor है, that are different for both of these. जो हमारे पास फाइनल फॉर्मूला आएगा मास डिपोजिशन का, that will be m is equals to z, and this q will be equals to the current multiplied by the time. So we can write I and t for the current and time. So here we can see जो हमारे पास मास है वो डिपेंड कर रहा है मोलर मास पे, जो हमारे पास n फैक्टर है उस पर, करंट एंड टाइम पर. सो जो हमारे पास मोलर मास, करंट एंड टाइम है वो दोनों के लिए सेम रहेगा. सो इट इज डिपेंडिंग अपॉन दी जो हमारे पास n फैक्टर है. एंड फॉर Fe3 पॉजिटिव it has 3, and for this it has the 2. एंड जो हमारा मास डिपॉजिटेड है दैट इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दिस. सो बाय दिस वी कैन से जो हमारे पास फेरस सल्फेट सॉल्यूशन होगा उसका मास ज़्यादा डिपॉजिट होगा बिकॉज इसकी वैल्यू कम है, एंड द मास इज और मास डिपॉजिटेड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दिस एन. सो जो हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट गिवन है दैट इज द इनकरेक्ट बिकॉज रिवर्स ऑफ दिस विल बी ट्रू. जो सेकंड स्टेटमेंट है, इट सेज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ एन एलिमेंट कैन बी obtained by dividing its equivalent weight by 96500. एंड जब हमें इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट को ग्राम इक्विवेलेंट की फॉर्म में लिखना होता है, और वी कैन से जो कंक्लूजन आता है हमारे पास फैराडेज लॉ से फॉर दिस z वैल्यू, जिसे हम इक्विवेलेंट और इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कहते हैं. And this comes out to be equivalent of the substance, equivalent of the substance
divided by 96500. It is because 1 Faraday deposits 1 gram equivalent of the substance. So जो हमारे पास ऑप्शन सेकंड है दिस इज द करेक्ट वन. एंड जो हमारे पास ऑप्शन थर्ड है इट सेज 1 Faraday always liberate 1 mole of the substance at the electrode. This is wrong because it differ for the different reaction और we can say different elements पे डिपेंड करते हैं कि कितना मोल ऑफ सब्सटेंस जो है वो लिबरेट होगा. एंड वी हैव ऑलरेडी सीन दिस फॉर्मूला फॉर द सेम. एंड द लास्ट ऑप्शन सेज जो 60 वाट बल्ब है दैट emits the 60 जूल ऑफ एनर्जी पर सेकेंड. एंड 1 वाट जो है दैट इज इक्वलेंट टू द 1 जूल पर सेकेंड. So by this we can say जो 60 वाट का बल्ब होगा that will give 60 जूल पर सेकेंड का एनर्जी मिलेगा. So this is the correct response. According to the given question we have to mark the statement which are not correct. So जो not correct statement है that are the option first and third. So जो हमारा final answer होगा that will be option first and third. So let us mark the option first and third as the correct response. So this was the whole solution. Hope you understood it well. Best of luck.